Hello everyone, welcome to my YouTube channel Competitors Passion. Previous class रे आमे Indian Polity series रो chapter number 4 start करथिले salient features of the constitution. आज आमे करिबा तार part 2. Previous class रे आमे किछि बड features पढिथिले जेमिति कि first थिला lengthiest written constitution, तापरे आमे पढिथिले drawn from various sources, तापरे blend of rigidity and flexibility, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, तापरे आज आमे पढिबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक अछि, त आसंतु स्टार्ट करिबा. जदि प्रीवियस वीडियोस देखि नाहांती देन जाई कि प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि, मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देई छी, जाई कि देखि नेबे. ठीक अछि, त आसंतु स्टार्ट करिबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन? Constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हैला आमे पढिले पूर्वरु कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हबा पूर्वरु आमे बहुत देशर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करथिलु एवं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर्स हमकु भल लागिथिला आमे ताको ड्रा करथिलु. तो ता भितर जेतेबेले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आसिला गोटे थिला अमेरिकन रो सिस्टम अमेरिका जोटा रे कि थिला हमर प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम आउ गोटे थिला ब्रिटिश रे जोठी कि थिला पार्लियामेंटरी सिस्टम. किंतु आमे कोन करथिले ना ब्रिटिश रो पार्लियामेंटरी सिस्टम को ऑप्ट करथिले, अमेरिकन रो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ऑप्ट करि नथिले. पार्लियामेंटरी सिस्टम रे कोन हुए ना पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, while the presidential system based on the doctrine of separation of powers between two organs. ठीक अछि, पार्लियामेंटरी सिस्टम ता कहा ऊपर बेस আছে, कहा ऊपर अछि पार्लियामेंटरी सिस्टम ता संपूर्ण भाबरे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मानक भितर अछि. आउ हमर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ता होछि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. पार्लियामेंटरी सिस्टम को आउ हमें कोन कहि परिबा? पार्लियामेंटरी सिस्टम को हमें वेस्ट मिनिस्टर बोली मध्य कहू. मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट बोली मध्य कहा जाए. द को गवर्नमेंट को हमर पार्लियामेंटरी सिस्टम को द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंटरी सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो एट द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन कोन करे केवल सेंटर रे नहे स्टेट्स रे मध्य ए सिस्टम को लागू करे. कोन कोन देखिबा स्पेशल फीचर्स अछि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रो. नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मध्य जणे रहबे, रियल एग्जीक्यूटिव भी रहबे. जेमिति कि हम इंडिया रे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की अछंती, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होछंती हमर प्रेसिडेंट, जोडा के हमें कहउछ नाम मात्र प्रेसिडेंट, तांको सिग्नेचर दरकार हबो. आ रियल एग्जीक्यूटिव की होछंती हमर प्राइम मिनिस्टर, से हमर रियल प्रकृत रियल एग्जीक्यूटिव आ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेले प्रेसिडेंट. सेकंड रूल अछि, सेकंड फीचर्स हला मेजॉरिटी पार्टी रूल. जो पार्टी रो मेजॉरिटी वोट पाइबे सेही पार्टी ही रूल को आसीबो. नंबर 3 कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर. लेजिस्लेटर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ता अछंती सेटा कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव माने नेबे. नंबर 4 मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटर. लेजिस्लेचर रे मिनिस्टर मानकर मेंबरशिप रहिबो. नेक्स्ट फिफ्थ फीचर कोन? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. हमर जो मंत्रिमंडल जोटा जितिले हमर जोटा मेजॉरिटी रहिला समानक भितरु लीडरशिप रे के रहिबे? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. देन डिसोल्यूशन ऑफ द पावर हाउस, लोकसभा और असेंबली. देन आउ कोन अछि? इवन दो द इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. जदियो आमे हमर पार्लियामेंटरी सिस्टम ता को ब्रिटिश रो पार्लियामेंट रु आनिछु बा ब्रिटिश पैटर्न रु आनिछु, किछिटा डिफरेंस अछि. कोन डिफरेंस अछि? जेपरि कि एग्जांपल दिया हेछि, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट भଳି हमर इंडियन पार्लियामेंट ता गोटे सोवरेन बॉडी नुह. आउ कोन दिया हेछि? आउ कोन डिफरेंस अछि? इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड. हमर जे हेड रहिले से जो होछन इलेक्टेड, जनता हमर गणतंत्र रे वोट देकी बाछुछंती इलेक्टेड हेड. जदियो ब्रिटिश स्टेट रे सेटा तांकर हेरिडिटरी, जेमति क्वीन कर डेथ हे गला त तांकर जे वंशज अछंती सिए हेबे नेक्स्ट. तो से होची हेरिडिटरी. किंतु हमर इंडिया रे हेरिडिटरी सिस्टम नाही, हमर कंप्लीटली रिपब्लिक अर्थात इलेक्टेड. इन ए पार्लियामेंटरी सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, पार्लियामेंटरी सिस्टम रे से इंडिया हो किंबा ब्रिटेन रे हो, प्राइम मिनिस्टर गर रोल होची सबुटु सिग्निफिकेंट एंड क्रुशियल दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट ए प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट.
से चाहे से ब्रिटिश रो गवर्नमेंट हो पार्लियामेंट सिस्टम किंबा इंडिया रो पार्लियामेंट सिस्टम हो हमर प्रधानमंत्री को रोल सबुठु बेसी सेथि पई किछि पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने ए हमर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टाको कोन कहंती प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट. The next feature is it is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. आमे देखिले प्रथमे अमेरिका रे प्रेसिडेंशियल सिस्टम थिला ब्रिटिश रे पार्लियामेंटरी सिस्टम थिला आमे ब्रिटिश रो पार्लियामेंटरी सिस्टम को ऑप्ट करिथिलु किंतु किछिटा डिफरेंस थिला. Doctrine of sovereignty of parliament is associated with British parliament while principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. काहे कि हमें कहू सिंथेसिस अछि दीटा रे हमें जदियो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो पार्लियामेंटरी सिस्टम ता आनिछु किंतु हमर जो जुडिशियल सुप्रीमेसी सबुडो हेड रे सुप्रीम कोर्ट जो हमर होछि जुडिशियल सेपरेट जुडिशियल रहउछि सेटा अमेरिका सुप्रीम कोर्ट रो आसीछि. Just as Indian parliamentary system differs from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that what exists in US. ठीक अछि काहे कि ना American Constitution provides for due process of law against that procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21. Indian Constitution Article 21 रे जिनसटा मेंशन कराइछि. तेनु therefore the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. अमेरिका रे judicial supremacy अछि तो जेतेबेले हमर फ्रेमर्स माने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करूथिले से माने कोन करूथिले गोटे प्रॉपर सिंथेसिस गोटे प्रॉपर मिक्स अप करिथिले कहार ना पार्लियामेंटरी सिस्टम ब्रिटिश रो आ जो जुडिशियरी जो सुप्रीमेसी अछि जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका रो. ठीक अछि. सुप्रीम कोर्ट on the one hand can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power. माने सुप्रीम कोर्ट कोन करि परियो डिक्लेयर द पार्लियामेंटरी लॉ को से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली मध्ये डिक्लेयर करि परिबो. सुप्रीम कोर्ट को से पावर दिया जाइछि. The parliament on the other hand can amend the major portion of the constitution. अन्य पक्षरे पार्लियामेंट को कोन अधिकार दिया जाइछि ना पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाइछि कि से माने किछि पोर्शन को मध्य मेजर पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन रो चेंज करि पारिबे. ठीक अछि. त सुप्रीम कोर्ट एवं पार्लियामेंट को दी जण को अलग अलग पावर दिया गला गोटे पक्ष रे दिया गला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि पदक्षेप को चेंज करि परिबो किछि रोल को चेंज करि परिबो आ सुप्रीम कोर्ट को दिया गला कि सुप्रीम कोर्ट जदी चाहिबो देन सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करि परिबो कि पार्लियामेंट जो लॉ देछि से लॉ टा होछि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने दी जण परस्पर विरोधी प्रकार हे जाउछन्ते. देन नंबर 7 इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अर्थ कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश करिछि जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट से इंटीग्रेटेड मध्य आ अलगा मध्य केमिति. The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Country रे जते कि भी कोर्ट अछन्ते से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रु स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट समस्त को टॉप रे सुप्रीम रे के रहिछि हमर सुप्रीम रे रहिला सुप्रीम कोर्ट. ठीक अछि. Below it या तळे there are high court in at the state level under high court या तळे के अछन्ते हाई कोर्ट या तळे स्टेट सबु स्टेट रे हाई कोर्ट अछि पुनी हाई कोर्ट तळे रे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अछि ता तळे अदर लॉयर कोर्ट सब अछन्ते कि समस्त को टॉप रे के रहि गला हमर सुप्रीम कोर्ट. This single system of court enforces both the central laws as well as state laws unlike in USA where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. Supreme Court is a federal court. Supreme Court होची की प्रकार कोर्ट हमर फेडरल कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट. जदि हमर से हम सुप्रीम कोर्ट हमको गारंटी दोची कि जदि हमर फंडामेंटल राइट रे किछि भी इश्यू होची देन सुप्रीम कोर्ट तार समाधान करिवो. The Constitution had made various provisions to ensure its independence. जेहेतु सुप्रीम कोर्ट जेहेतु हमर सुप्रीम कोर्ट एते बड़ बड़ राय देउची एते बड़ बड़ हमर गार्जियन भलिया काम करूची गार्डियन भलिया काम करूची तो सुप्रीम कोर्ट को निहाती कोन दिया जवा दरकार सुप्रीम कोर्ट को किछि स्पेशल वेरियस प्रोविजन दिया जाइछि स्पेशल प्रोविजन दिया जाइछि जहा द्वारा कि ये कोन हेकी रही परिबो इंडिपेंडेंट हेकी रही परिबो.
जेपरी कि सिक्यूरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस मानकर सिक्यूरिटी से मानकर रिटायरमेंट एज समस्त गोटे अलग फिक्स्ड सर्विस कंडीशन केते वर्ष काम करि परिबे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो जहां भी खर्च आसुची चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो कंसोलिडेटेड फंड रु चार्ज करा जिवो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर ban on practice after retirement पर practice करि परिबेनी power to punish for its contempt vested in the supreme court separation of the judiciary from the executive एही परि भाबरे बहुत किछि दिया जाई छी then next salient feature and most important feature is our fundamental right ठीक अछि हमर को पार्ट रे लिखाई छी पार्ट 3 हम प्रथम पकड़ी दिले हमर केतरा पार्ट अछि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हमको दउची केतरा फंडामेंटल राइट 6 6टा फंडामेंटल राइट हमको दउची कोन कोन फंडामेंटल राइट देखि दियंतु very important right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational right to constitutional remedy ठीक अछि इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 भितरे लिखाई छी राइट टू इक्वालिटी देन फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ए समस्त राइट को वन बाय वन गोटे लेखा चैप्टर अछि हमर एम लक्ष्मीकांत ए सीरीज रे हमें पूरा गोटे गोटे चैप्टर वाइज गोटे गोटे आर्टिकल को हमें आर्टिकल वाइज एवं फंडामेंटल्स राइट्स को हमें वन बाय वन कंप्लीट करिया वर्तमान पे हमर केतरा फंडामेंटल राइट अछि 6टा फंडामेंटल राइट अछि को पार्ट रे अछि पार्ट 3 रे अछि देन किंतु जतडा ओरिजिनली फॉर्मेशन हेइथिला सेतबेला हमर केतरा आर्टिकल थिला सॉरी केतरा फंडामेंटल राइट थिला 7 फंडामेंटल राइट थिला 7टा फंडामेंटल राइट थिला वर्तमान 6टा अछि को आर्टिकल को रिमूव कर दिया गला ना राइट टू प्रॉपर्टी जोटा आर्टिकल 31 रे आर्टिकल 31 रे थिला राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करि गला एंड नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 6 fundamentals right but originally the constitution provided for 7 fundamentals rights okay Article 31 was deleted from the list of fundamental rights by the 44th amendment very important को amendment हिसाब रे हमरा right to property को remove कर दिया जाइथिला by the 44th amendment act of 1978 and it is made a legal right under article 300A a right to property टा को हमर fundamental right remove कर दिया जाई कि कोन कर दिया गला legal right कर दिया गला आ कोठी लिखा गला ताको 300A in part 12 of the Constitution. Fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy. Fundamental rights हमको कौन बताउची ना fundamental right हम meant for promoting idea of political democracy हमर अछि हमर गणतंत्र शासन चाली छी बोली हमको ये आइडिया दोछि के fundamental right they operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislator. They are judiciable in nature हमर जो fundamental rights गुडा होउछंदी judiciable in nature that is they are enforceable by the courts for their violation जदी fundamental rights को violate करा जाउछि then जणे जहार fundamental right ऊपरे किछि आंच आसुछि से कोर्ट रो द्वारस्थ हेई पारिबो supreme court which can issue the writs of habeas corpus mandamus prohibition century and quo warranto for the restoration of his right fundamental right ऊपर जदी किछि आंच आसुछि कोर्ट ए सब रिट्स अप्लाई करि परिबो then however fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restrictions किंतु fundamental right गुडी को absolute नुह से माने reasonable restrictions अछि further they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the parliament through a constitutional amendment act कोन से एक constitutional amendment act माध्यम रे हम याको repeal मध्य करि परिबा they can also be suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by article 20 and 21 जदी किछ emergency आसुची fundamental right को हम repeal मध्य गवर्नमेंट करि पारिबो देन नंबर 9 अगेन very important यार गोटे स्वतंत्र चैप्टर अछि डीपीएसबी ए एम लक्ष्मीकांत रे ही अछि गोटे चैप्टर डीपीएसबी आमे याको डिटेल्स रे पढिबा जतरे चैप्टर पढिबा वर्तमान पई डीपीएसबी होछि गोटे salient feature and very important features of our Indian constitution एवं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर आंबेडकर ए जो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर
enumerated in part 4 dpsp क्यों पार्ट रे अछि बहुत थरा क्वेश्चन आसी सारी पार्ट 4 रे अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट 4 रे अछि dpsp they can be classified into three broad category हमर जो dpsp को केते कैटेगरी डिवाइड करा जाय छी थ्री ब्रॉड कैटेगरी सोशलिस्टिक गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से सब ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी टा मेनली करा जायतिला कहा पई ना आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इकोनॉमिक और अर्थनैतिक डेमोक्रेसी एवं सोशल डेमोक्रेसी रहिबो बोली डीपीएसपी को लेखा जायतिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया माने जनमंगलकारी हेई परिबो हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट किंतु फंडामेंटल्स राइट जते बेले हमको दिया होची हमको कहा होची कि जदी फंडामेंटल राइट्स रे किछि प्रॉब्लम आसुची तमे कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबो फंडामेंटल राइट बट जदी डीपीएसपी पई तमे कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबो नाही ठीक अछि माने से माने हेले नॉन जस्टिसिएबल दैट इज they are not enforceable by the courts for their violation जदी डीपीएसपी वायोलेट होउची ताले हमें कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबा नाही किंतु तथापि कॉन्स्टिट्यूशन निजे डिक्लेयर करूची दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री किंतु मेंशन अछि कि एई सब डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल होउची आम कंट्री पई बा आम कंट्री रो गवर्नेंस पई होउची फंडामेंटल एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ एवं कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि कि लॉ बनेबा पूर्वरु आमे निहाती आमे डीपीएसपी को फॉलो करिबा अर्थात द इंपोज ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एप्लीकेशन आमे अर्थात कोन कर जे आमे मोरल ऑब्लिगेशन लगै परिबा किंतु रियल फोर्स करि परिबा नाही द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल दैट इज पब्लिक ओपिनियन अर्थात पब्लिक पाई भलो पब्लिक वेलफेयर पाई ही एटा करा जाउची जेतेबेले मिनर्वा मिल्स केस हेइथिला 1980 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिला जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पाइछु हमें कि सेटा बैलेंस रखाई छी फंडामेंटल्स राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मध्य रे ठीक अछि तापरे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी परे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन आसी गला हमर फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जेतडे हमर लेखा हेइथिला सेठी कोनोसी प्रकारर फंडामेंटल ड्यूटी नथिला एगुडा केबे ऐड करा गला ना जेतेबेले हमर इंटरनल इमरजेंसी आसीला सेतेबेले हमर फ्रेमर्स माने फील करले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे जेपरि जनता माननकु किछि अधिकार दिया जाउची तांको किछि कर्तव्य भी दिया जिबा कथा तांको किछि ड्यूटी दिया जिबा कथा जहा फल रे कि बाय द 42nd amendment act of 1976 कोन करा गला ना recommendation of the sworn seeing committee very important according to which committee ro recommendation de ko committee ro recommendation de amar fundamental duty add kara jaitila sworn seeing committee 86 constitutional amendment act of the 2002 added one more fundamental duty au gote fundamental duty joint kar diya gala part 4a of the constitution which consists of only one article 51a specifies the 11 fundamental duty ketara fundamental duty अछि 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम कोन कोन हमर ड्यूटी दिया जाय छी देखो तो 11 टा प्रथम नंबर 1 हैला टू रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग to respect national anthem, to protect the sovereignty and unity integrity of the country, then promote the spirit of the common brotherhood and to preserve the rich heritage of our composite culture and so on एभली अछि फंडामेंटल ड्यूटी सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी हमको गोटा रिमाइंडर मने पकई दोछि कि जदी हमें राइट्स को बा हमर अधिकार को एन्जॉय करिया पई चाहूछु they also have to be quite conscious of duty तो सेमानंकु निहाती निजर ड्यूटी प्रति निजर कर्तव्य प्रति भी जागरूक बा सचेतन हबा पई पड़िबो they owe to their country their society and their fellow citizens however like the dpsp the duties are also non justiciable किंतु जेपरि हमर फंडामेंटल राइट्स ता कोन थिला जस्टिसिएबल थिला सुप्रीम कोर्ट रो द्वारा हमें हेई पारुथिले किंतु डीपीएसपी बेल को से जिंस नथिला ठीक सेही परि हमर फंडामेंटल ड्यूटी गुडी को मध्य कोन नॉन जस्टिसिएबल अटे ठीक अछि नेक्स्ट फीचर होची ए सेक्युलर स्टेट ठीक अछि नेक्स्ट फीचर्स को हमें नेक्स्ट क्लास रे पार्ट 3 रे डिस्कशन करिबा सेक्युलर स्टेट या पर आउ मध्य किछि फीचर्स अछि एंड
आमे ए चैप्टर टी को कंप्लीट कर देबा ठीक अछि तो पार्ट 3 पई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु पार्ट 3 खूब शीघ्र अपलोड हो जो नेक्स्ट क्लास तापर हमें 1 बाय 1 ए सीरीज टा को यथा शीघ्र कंप्लीट कर देबा ठीक अछि आज पई एति की धन्यवाद।